Moving on in other news, it's CBI versus Bengal government war words escalating. According to our sources, the Arjikar rape and murder case, the CBI will likely file an appeal soon. CBI is seeking a death sentence. Remember, even the Bengal government had said that they're not fully convinced that with the life imprisonment, though till death, according to the judge, but the judge also maintaining that it wasn't the rarest of rare case, that the life imprisonment till death is what appears to be the suitable quantum of punishment. Bengal CM in fact said wasn't convinced. They wanted death punishment and possibly will take a legal route, but again, even the CBI is currently mulling an appeal. CBI has been seeking the death sentence. So there's been a war of words. Remember that Bengal CM has been targeting the CBI, in fact, saying the CBI did not proceed properly with the case, and that's why not enough evidence despite all that happened on the ground. So that's currently what is happening between the Chief Minister and the government in itself. Remember, the Bengal police had already caught the accused, and that is when CBI took over as well, investigated the remaining part of it, and that is what was an anger for Mamata Banerjee to say why was the case taken away from the Bengal police, and she said, I'm convinced it's a rarest of rare case and demand capital punishment. How could the judgment come to the conclusion that it's not rarest of rare? We insist that it should be death penalty. Arvind Ojha joining me for the latest on that. Arvind, कहीं ना कहीं देखा जाए अगर जो CBI है और जो बंगाल गवर्नमेंट है वो सेम ही डेथ पेनल्टी मांग रहे हैं, तो किस तरह से ये आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि बंगाल सरकार CBI को टारगेट भी कर रही थी। देखिए, इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की थी, तमाम एविडेंस वो कलेक्ट किए थे और सीबीआई की ही इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लोअर कोर्ट है उसने जो अक्यूज्ड है संजय राय उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब सीबीआई के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि जो ऑर्डर आया है उसके खिलाफ अपील दायर करेगी सीबीआई हाई कोर्ट में। बहुत मुमकिन है कि 1 से 2 दिन के अंदर सीबीआई की टीम जो कोलकाता के हाई कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन मूव करे और जो संजय राय है उसकी डेथ पेनल्टी की मांग करे, यानी मौत की सजा की मांग करेगी सीबीआई। हालांकि सीबीआई ने लोअर कोर्ट में भी जब सजा पर बहस हो रही थी तो डेथ पेनल्टी की मांग की थी, लेकिन चूंकि अब फैसला आ चुका है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जो पूरा ऑर्डर है सीबीआई की टीम ने उस ऑर्डर को पूरी तरह से रीड किया है और उसके बाद अब सीबीआई सोर्सेज ने बताया है कि 1 से 2 दिन के अंदर सीबीआई की टीम कोलकाता हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करके संजय राय की डेथ पेनल्टी की मांग करेगी। All right, Arvind, thank you very much for the latest on this coming in. So the CBI will appeal, claiming that they have enough evidence that it deserves a capital punishment.